You see, basically, we have to learn how to compose things and how to expand our mental horizons and our canvas, academic canvas, so that we can create an impact on the examiner. Things are not difficult. It is just give a boost, a trigger to your creative faculties, to the knowledge already ingrained in your mindset, and whatever you have learned through your experiences, your exposure and interaction with the academics, with the society, with the happenings, with the events, and man's brain and its intellect is so tuned and programmed. Whenever any incident happens, it gives answer to that, it gives solution to that. And you see, you develop your own point of view immediately, and that is preserved in your mindset. The point is, you have to recall whenever you are supposed to talk about that or respond to that question. In the examination hall, the problem is the things are there in our mind, but certain psychological situations create a kind of hindrance, a kind of obstacles, the obstructions, not allowing that positivity of knowledge and academics in your mind to reproduce the same, recall the same, and put it on the answer sheet. That is a psychological phenomenon. Because you will agree with me, if when you are out of the examination hall, you are sitting with your colleagues or in a very relaxed environment, your brain start recalling the same, and you will be talking very beautifully, and you will be contributing a lot, and people will be really impressed that you have a lot of knowledge about that. But the problem is, when I was in the examination hall, the thing didn't come to my mind. या जब मैं कहीं तकरीर कर रहा था, पता नहीं सारी चीज़ें किधर गई, आई कुड नॉट रिकॉल दैट. तो ये ज़्यादातर इंसान का जो है, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है. यू वुड एग्री विद मी, एंड द पॉइंट इज हाउ टू ओवरकम दैट. उसके लिए यही है, यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट, राइट इट डाउन, स्पीक इट आउट. व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, then the mind also gets tuned, it assumes that format in which it starts performing in a challenging situation as well. एक learning skill है. Creativity भी एक learning skill है, it is learnable skill. इसी तरीके से the performance in the examination hall, और जहाँ आपने अपनी intellectual ability को express करना है, तो ये भी एक learnable skill है. एंड द लर्नेबल मीन्स, जैसे कि हम अपने मसल्स को डेवलप करना हो तो हम कहते हैं एक्सरसाइज करो. अगर आपने अपना स्टेमिना दौड़ने का इंक्रीज करना है तो कहते हैं कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू करें, तो एक टाइम आ जाएगा कि आप काफ़ी दौड़ सकेंगे. तो इट मीन्स योर लेग्स, योर लंग परफॉर्मेंस, योर हार्ट परफॉर्मेंस, everything get accustomed, tuned and programmed to respond those challenges or those questions when they are asked or when they are put on to perform. तो ये perform करना शुरू कर देते हैं. The same thing is the brain. It's a, you take it as a muscle. इससे काम लेना सीखेंगे तो ये काम करना सीख जाएगा और काम फिर करेगा चैलेंजिंग सिचुएशन में. तो इंसान की जो एक एबिलिटी है, जो मैं कहता हूँ तो कामयाब लोग हैं दुनिया में, जो अचीवर्स हैं, ये लर्न कर जाते हैं, ये प्रैक्टिस के साथ डेवलप करते हैं, पॉलिश करते हैं अपनी एकेडमिक फैकल्टीज़ को और अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को, लाइक अदर मसल्स, इवन अपनी क्रिएटिव फैकल्टी को लाइक अदर मसल्स. तो ब्रेन इज आल्सो ए काइंड ऑफ मसल. तो इसको जैसी जैसी सिचुएशन में डालेंगे, पुश करेंगे चैलेंजिंग सिचुएशन में, तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन में परफॉर्म करने की एबिलिटी इख्तियार करता जाएगा.